आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा है। अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 जून तक अमेरिका दौरे पर पीएम मोदी रहने वाले हैं। आज देर रात न्यूयॉर्क पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। अमेरिका में पीएम मोदी के भव्य राजकीय स्वागत की तैयारियां की गई हैं। पीएम मोदी के स्वागत में 20 शहरों में एकता मार्च निकाले जाएंगे। ये बेहद खास है। दूसरे देश में हमारे देश के भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में 20 शहरों में एकता मार्च निकाली जाएगी। यूएन हेडक्वार्टर में कल योग दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, यानी कि आगाज वहां पर होगा योग का। हालांकि देश में भी हर जगह मनाया जाएगा योग दिवस, लेकिन प्रधानमंत्री वहां है तो वहीं यूएन हेडक्वार्टर में कल योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। बाइडेन मोदी के लिए राजकीय भोज की अगवानी भी करेंगे, ये जानकारी भी मिल रही है। मोदी बाइडेन मुलाकात में डिफेंस डील को मंजूरी मिल सकती है। हर किसी की नजर इस पर भी। अमेरिका के दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी है कि मेरी यात्रा दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगी। योगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा हैं। और जब से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से तो यहाँ यूएस में योगा को जाना गया है। मतलब सब लोग योगा जान गए हैं अब, और बहुत अच्छा। हम तो चाहते हैं हर बार मोदी सरकार आए। मैं इंडिया से यहाँ पे विज़िट करने आई हूँ और मुझे प्राइम मिनिस्टर जो है बहुत अच्छे लगते हैं, एंड जिस तरीके से उन्होंने योगा को प्रमोट किया है मुझे बहुत अच्छा लगता है। हर बार मोदी सरकार। इस बार 21 जून यादगार साबित होने जा रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क स्थित यूएन में सुबह 8 बजे से 9 बजे योग दिवस मनाएंगे। पूरी दुनिया से 180 देशों के प्रतिनिधि इस दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री के साथ कर रहे हैं कि कैसे भारत ये जश्न विश्व के सबसे ताकतवर देश में मनाने जा रहा है। दरअसल इस पूरे योग दिवस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लीड करेंगे। वहीं इस योग दिवस के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व पटल में यह संदेश भी पहुंचाएंगे कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने मजबूत हैं। देखते हैं योग दिवस तैयारियों को लेकर हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर की न्यूयॉर्क टाइम्स से एक खास रिपोर्ट। मेरे चेहरे की मुस्कान ये बताती है कि जब दूसरे देश में अपने मिलते हैं तो कैसा लगता है। मेरे साथ भारतीय मौजूद है बहुत सारे, और उनके चेहरे की मुस्कान भी ये बताती है कि देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी से इसलिए प्यार नहीं कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन उनमें कुछ खास बात है, और यही वजह है कि हमारे साथ हमारे देश के लोग हैं और वो क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे। हमारे साथ आपका नाम? गुरु दिलीप जी। दिलीप जी, मुझे अभी आपसे बात करके पता लगा कि जो ये योगा डे मनाया जा रहा है उसके पीछे की तैयारियों के पीछे आपका बड़ा रोल है। आप भारत में कहाँ से हैं, यहाँ पे कब तक हैं, और क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? I am originally from Cochin. Okay. Last 23 years I am part of the UN NGOs, and we promote the International Day of Yoga because of Modi ji. It happened. I had to congratulate our Prime Minister making yoga is a global movement. बिल्कुल 9 साल पहले ये अपील की गई थी यहीं से, और कहा था कि पूरी दुनिया को इसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, और योगा मस्तिष्क शरीर सब में एक अलाइनमेंट की बात है। लेकिन तैयारियों की बात करते हैं, क्योंकि आप इसके तैयारियों के पीछे क्या कुछ तैयारियां हैं। माना जा रहा है 180 से ज्यादा देश भाग लेने वाले हैं। We are totally ready for Wednesday. The ground is ready. General Assembly is ready. If rain is happening, we'll go to the General Assembly, have a beautiful event. All around 3,000 people are gathering on Wednesday morning to celebrate our proud International Day of Yoga. And Modi ji is the chief guest. And all the officials from the UN are going to join. And we are going to different cities, putting events every single day, online and offline. तो आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ तो लगभग 3,000 से ज्यादा लोग मौजूद होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के अध्यक्षता कह सकते हैं कि सत्र के लीडर के तौर पर यहाँ पर वो रहेंगे, और 180 देशों से जो डेलीगेट्स आएंगे उनको योगा कराएंगे। लेकिन उसके अलावा भी अमेरिका के अलग अलग सिटीज में जाकर भी योगा उस दिन सुबह से मनाया जाएगा। We already made a wonderful resolution on June 5th at the New York State Assembly for Yoga Day on June 21st. Governor is going to sign the resolution. Last year we did at the Senate and the Assembly. So see,
how we are moving yoga as a globalized, universal spiritual movement. So it can be said that it is just because of Narendra Modi? No, he is the person can propose at the UN. Right. We all are doing the foundation. He just made the light the lamp. We need somebody to promote at the UN. He did very well. Right. I had to acknowledge the part he did. तो आपके चेहरे पे खुशी है, ये अक्सर ऐसी रहती है, या देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं इसलिए है? I am so happy and thrilled to see my Prime Minister showing India as the number global leader without any fight. Just serve, serve, serve. That's the Indian culture. What a beautiful thing. नरेंद्र मोदी इज अ ग्लोबल लीडर. भारत 24 पहले भी कई बार नरेंद्र मोदी को ग्लोबल लीडर कह चुका है, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, हमारे साथ जो तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी एक ग्लोबल लीडर के तौर पर, और जो ये इवेंट हो रहा है उसमें और कुछ निकल कर आएगा. आप से जानना चाहेंगे आपका नाम, भारत में आप कहाँ से हैं और कब से यूएस में आप हैं? My name is Bawa Jain. I was fortunate we were born in Punjab once upon a time, long time ago. But I was in Delhi most of the time. I went to study at Bishop Cotton School in Simla. Right. But for the last over 30 years, I'm here at the United Nations community. I have been involved in every major thing happening over the last 30 years, and officially with the UN and other activities. In fact, what is important to remember today is Modi ji was here at the United Nations in 2000. In 2000, I was the Secretary General for the Millennium Summit, and a big delegation came from the Indian diaspora, and Modi ji was part of that delegation. And as luck would have it, if you can remember today, that time I did not have time to speak to him. Oh. I was so busy with all the preparation, all the leaders that were taking place. But Kofi Annan, everybody was there, the Secretary General. And after that, for the Yoga Day, why it is significant? Having been involved in the United States, there's not another chance that we have witnessed such a adoption of a resolution by acclamation. Absolutely. There was no process. The way the General Assembly extensively gets into the process to negotiate a resolution, Modi ji proposed, by acclamation it was accepted. Absolutely. And that was historic. That was historic. And today, Modi ji is the #1 global leader. Look at all that has been reported by all the assessment agencies, all the polls, everything. Where he goes and commands respect and authority. This has never happened in the history of India. Since its independence, no Prime Minister of India has been accorded that kind of recognition and respect. Why? It is not just because Modi ji as a person, because they know this is an honest man. This man is first and foremost committed to the welfare and betterment of every Indian, irrespective of their caste, creed or religion. And actually tomorrow at Ground Zero with the Mayor of New York, there's Indian religious leaders coming together to welcome Modi ji and tell them, we are united. All the media sometimes, especially the BBC and the Western media, which try to portray divisions in the Indian society, how could he win with such a mandate? I was actually interviewed by Fox Network when he won the elections for the first time. I witnessed firsthand. It was a very proud moment for me because, you know, I've known him. He's been there. And after that, I did have lunch with him also at somebody's home. So you've got the chance to meet him, huh? Yes. And this time, are you expecting to meet him again one more time? You know, I'll tell you why. I don't want to impose on him. You know, he knows who I am. He knows that we are here to serve. Just as a photo opportunity, I am not interested. Oh, beautiful. We are here and each of us should have that kind of conviction. Let us first and foremost serve. Having a photo opportunity, then what? What is that worth? That's But not what guides Modi. This brings goosebumps because in another country, people are telling him, calling him the ग्लोबल लीडर. और आपने इतने खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया कि उन्होंने जिस तरीके से एक योगा को इतने बड़े आह्वान के साथ पूरी दुनिया एक साथ उसे इंटरनेशनल तरीके से सेलिब्रेट कर रही है, वो केवल और केवल वही कर सकता है जिसके पास विजन हो, जिसके पास दृढ़ इच्छा हो. वही व्यक्ति इस तरीके से योगा इतिहास अगर पीछे जाए तो सालों साल, दशकों से बात करें या 1000 साल से योगा चली आ रही है, लेकिन इस तरीके से उसे सेलिब्रेट करना केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास विजन हो. I'll tell you, last year I was in Saudi Arabia. They were celebrating there. Right. When in a Muslim country you saw that before. Why? Because Crown Prince Mohammed bin Salman, the deputy custodian of Holy Mosque, when he comes to India, he lands India, he says, Modi ji is my older brother. Absolutely. Which Indian leader has had that kind of respect?
he doesn't go with a begging bowl to any country. He goes with conviction. And he declared in the General Assembly of the UN, you know, come, if you don't have employment, India will give you employment. I mean, what kind of courage that takes, you know? And he means it. He means it. And look what the transformation of India is in every aspect, I just pray for his long life, and I wish more and more countrymen realize how we have benefited. We are blessed to have a leader such as Prime Minister. Despite he's living in America for last 30 years, still his golden words for the Prime Minister of India shares a lot about how they feel about the country, the Prime Minister. आपका नाम जानना चाहेंगे? I go by the name Brother Oneness. I'm originally from Karnataka. I have been here 50 years. I'm an attorney by profession. I work with the refugees who are seeking refuge in the United States. So Modi ji's principle of Vasudeva Kutumbam is the one dear and more dear to me. Brother Oneness means we are all connected by this one universal force. We are all children of God. We are here to experience God's love and share with all of the world. That's what our Sanatana Dharma said. That's what all the faiths talks about: non-violence, unity, oneness, compassion, inclusion, expansion, all that. Modi ji is all for that. My father was a Janasangh member way before it was a Bharatiya Janata Party. He ran for election from Karnataka in 1967. Of course, he didn't win, but he was one of that RSS, that Hindutva, basically inclusion of everyone. That is the point. That's why he's called as the boss by the Australian Prime Minister. You know, so we are so proud of him as a native Indian, also married to somebody who's from Pakistan, which raising international children. You know, it's really promoting that unity, oneness, peace, love, compassion for all of creation. अमेरिका की धरती से ये सुनना कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनिटी, पीस, कंपैशन, ये तमाम चीजें, ब्रदरहुड, ये तमाम चीजें अगर किसी एक लीडर में है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमेरिका की धरती से ये सुनना कि अगर किसी के अंदर विजन है, कोई ग्लोबल लीडर है, या एकता में अनेकता में एकता की जो बात करने वाली बात है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। हमने तीनों से बात की और तीनों ने किसी सब के चेहरे पर एक जो भाव है वो प्राइड वाला है, एक भाव है वो खुशी का है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने वाले हैं। और इतनी खूबसूरत तरीके से तीनों ने कहा कि वो दुनिया में एक ग्लोबल लीडर के तौर पे केवल अपने विजन, अपनी ऑनेस्टी, अपना कंपैशन, ह्यूमैनिटी और प्यार की वजह से इतना आगे बढ़ पाए हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, देश के नहीं दुनिया के और बड़े लीडर की तरह उभरें। कैमरा पर्सन विकास के साथ अदिति नागर, न्यूयॉर्क।